What's your expectation about the Union budget? You see, the fundamental reality is that since 2019, despite all the concessions that the finance minister gave to corporate India, the Indian economy is being run by public capital investment. And that's why if you look at the profile, the public capital expenditure or public capex has increased every year from 2019 onwards. It is understandable that for a few years there was a setback because of COVID-19. Yes. But fundamentally, private investment is not kicking in. And till the time private investment does not fire the engines of the Indian economy, all these figures that will be trumped out by the government, they are really meaningless. There is a severe unemployment crisis on the ground. There is inflation in food items, which is impacting ordinary people. By changing benchmarks or by changing goalposts, if data is being dressed up to present a rosy picture, that is not the picture of the Indian economy. The fundamental thing is that private capital expenditure, which is essential to fire the engines of any economy, has not kicked in the last 6 years. Sir, in Gujarat, Rahul Gandhi slammed PCI and also questions on SIR. Well, the honorable leader of the opposition, Shri Rahul Gandhi, is absolutely correct. When the debate in Parliament on electoral reforms, which was primarily a debate on the SIR, took place, I had led that debate on behalf of the opposition benches, and I had raised a fundamental question which has not been answered till now. That from where does the Election Commission draw the constitutional or legal authority to conduct a pan-India or a nationwide or a statewide SIR? In fact, neither is that authority there in the Constitution of India, nor is it there in the Representation of People's Act. The Representation of People's Act speaks of constituency level micro interventions in order to correct aberrations. Now the justification of the Election Commission is that SIRs have been conducted earlier also. And as I had pointed out in Parliament, multiple wrongs don't make a right. And this is the fundamental question which even the Supreme Court should adjudicate on priority. Does the Election Commission of India have the constitutional or the legal mandate to conduct an SIR? In my respectful opinion and in my reading of the law and the Constitution, it does not have that authority. Sir, what's your reaction about the Bangladesh Hindus that died? And even today, the news came out from the Bangladesh that the one Hindu died. The fundamental question is that India has a neighborhood first policy. Do any of India's neighbors have an India first policy? I think that is the fundamental question which every strategic thinker, whether in government or outside, needs to answer. Pakistan is a different kettle of fish altogether. Pakistan will never mend its ways primarily because it is a military which owns a state rather than a state having a military, and that has implications in terms of the cross-border terrorism that they have been perpetrating. But insofar as in rest of India's neighbors are concerned, it is fundamentally important to go back to the drawing board and answer this question for ourselves, that while we have a neighborhood first policy, why doesn't any of India's neighbors have an India first policy? Right, sir. Thank you. आने वाला है कुछ दिनों में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर? देखिए, बुनियादी बात ये है कि 2019 में वित्त मंत्री ने जो कॉरपोरेट जगत है उसको बहुत सारी छूट दी थी, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसमें, पर उसके बावजूद
जो निजी निवेश है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो पिछले 6 साल से बढ़ा नहीं है। तो सरकारी निवेश से या पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 6 वर्ष से चलती रही, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक ये जो निवेश है, निजी निवेश, वो भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं होना शुरू होता, भारत की अर्थव्यवस्था निजी निवेश पे नहीं चलनी शुरू होती, तब तक जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है। ज़मीनी स्तर के ऊपर बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, जो महंगाई है उसके कारण आम गृहिणी की कमर टूट गई है, और इसलिए ये जो जीडीपी के नंबर दिखाए जाते हैं, ये जीडीपी के नंबर जो वास्तविकता है अर्थव्यवस्था की, उसको नहीं दर्शा रहे हैं। सर, गुजरात में भी राहुल गांधी जी ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। बुनियादी प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग के पास संवैधानिक तौर पे या कानूनी तौर पर ये अथॉरिटी कहाँ से आती है, उनके पास ये मैंडेट कहाँ से आता है, उनके पास ये औचित्य कहाँ से आता है, कानूनी औचित्य कहाँ से आता है कि वो पूरे प्रदेश में या देश में एसआईआर करें। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना थोड़ा बहुत कानून और संविधान मैंने पढ़ा है, संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये है कि अगर कहीं पे किसी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, उसको ठीक करने के लिए ये एसआईआर का प्रावधान किया गया था। अब चुनाव आयोग ये कहती है कि जी पहले भी एसआईआर होते रहे हैं, तो अंग्रेजी में कहावत है मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और इसलिए उच्चतम न्यायालय को भी सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि क्या संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे चुनाव आयोग को ये एसआईआर करवाने का औचित्य है कि नहीं। सर, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई, आज भी एक लेकी हिंदू की वहाँ हत्या कर दी गई है। देखिए, बुनियादी प्रश्न ये है कि अब कई दशकों से कई सरकारों की ये नीति रही है कि हम अपनी विदेश नीति में जो पड़ोसी देश हैं उनको प्राथमिकता देके चलते हैं, नेबरहुड फर्स्ट। अब विडंबना ये है कि हम तो नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं, पर कोई भारत का ऐसा पड़ोसी है जिसकी नीति इंडिया फर्स्ट है, और उसका जवाब ये है कि ऐसा कोई देश नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रोत्साहित करने वाला राष्ट्र है, पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र है जहां एक राष्ट्र के पास फौज नहीं पर एक फौज के पास राष्ट्र है, तो वो एक और बकेट में या एक और संदर्भ में उसको देखने की ज़रूरत है। पर जहां तक भारत के बाकी पड़ोसी हैं, जितने सामरिक विशेषज्ञ हैं, सरकार में हों या सरकार के बाहर हों, उनको बहुत गंभीरता से इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि कोई भी भारत का पड़ोसी देश की पॉलिसी इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं है।